ये कोई 28:30 पे कर दें। All right. I'm live, na? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. अफगान पीस डील टॉपिक जो भी हम पढ़ने वाले हैं। अफगान पीस डील और फिर जो बाइडेन हैज डिसाइडेड टू रीविजिट द डील, critically evaluate the chances of peace in Afghanistan, and also analyze or predict the future relations between Pakistan and United States of America. पहले इस क्वेश्चन को समझो। पाक यूएस रिलेशंस आपने किसी और एंगल से देखने ही नहीं है, सिर्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान देखने हैं। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ अफगान पीस प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में देखने हैं। आपके क्वेश्चन का एक डायमेंशन क्या है? द पीस डील, उसको हाईलाइट कर दोगे। उसके बाद बाइडेन हैज डिसाइडेड टू रिविजिट द डील। अब वो क्या रिविजिट करेंगे हमने एक्सप्लेन करना है, और फिर जब रिविजिट करेंगे तो चांसेस ऑफ पीस क्या होंगे, एंड देन पाक यूएस रिलेशंस कैसे होंगे। लास्ट मॉक पेपर में ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। तो जिन लोगों ने इसको इस तरीके से ब्रेक किया है वो क्वेश्चन आंसर ठीक है, बाकी जिन्होंने यूं ब्रेक नहीं किया है वो आंसर ठीक नहीं है। ठीक, नाउ इसको ए टू जी प्योरली क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ा रहा हूं। In December 2018, then President of America, Mr. Trump, wrote a letter to the Prime Minister of Pakistan seeking the help of Islamabad in bringing Taliban onto the dialogue table, to which Pakistan duly responded. Islamabad used its due pressure on the Afghan Taliban to come to the dialogue table. The result was Doha deal that was signed in February 2020 between Afghan Taliban and United States of America. From then onward, intra-Afghan dialogue initiated, and numerous developments also made in the intra-Afghan dialogue process. Pakistan was the key player in the negotiation process, has been the key player in the negotiation process. But now Joe Biden has announced to revisit the deal. डील को सस्पेंड नहीं किया, सिर्फ क्या अनाउंस किया है? टू रिविजिट द डील. This would
complicate the situation in Afghanistan once again. The already complicated situation would be further complicated in Afghanistan. That would have far abnormal negative implications on the peace and stability chances in Afghanistan, and may also deteriorate Islamabad-Washington relations with each other. मैंने प्योरली इंट्रो दिया, स्टेटमेंट को देखे और फिर ये इंट्रो को देखे, इसी वक्त बनाया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे? दोहा डील। The salient features of the Doha deal were US and NATO would pull out their troops from Afghanistan. And the first phase, both the parties, US and NATO, pulled more than 5,000 troops. Each of the party pulled out more than 5,000 troops from Afghanistan. And 14 months strategy was given, or 14 months process was given for the pullout of the remaining troops from Afghanistan. ठीक, second, दूसरा की पॉइंट क्या था? That was the release of the prisoners. US would release Afghan Taliban prisoners. उसके बाद Afghan government would release Afghan Taliban prisoners. तीसरा, Afghan Taliban would release the prisoners of Afghan government, US and other international prisoners captivated by Afghan Taliban. दो बातें। तीसरी बड़ी बात क्या थी? That is the drive or the war or the fight against ISIS would be intensified. On one hand, Afghan Taliban, on the other hand, Afghan government, on the other hand, US and NATO troops would speed up their fight against ISKP. ISIS नहीं, ISKP, Khorasan province, Islamic State of Khorasan province. तीन बातें। फोर्थ, क्या डिसाइड हुआ? दैट इज के Afghan Taliban would drop weapons and join the mainstream. Afghan Taliban weapons को ड्रॉप करेंगे, फाइटिंग को स्टॉप करेंगे और मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करेंगे. Joining the mainstream means power share with Afghan Taliban in the government process. जो गवर्नेंस प्रोसेस इन अफगानिस्तान है उसमें उनके साथ शेयर किया जाएगा, इन अफगान तालिबान को शेयर दिया जाएगा. इसी तरीके से फिर US would help out the negotiation between Afghan Taliban and Afghan government. US facilitator बनेगा in the negotiation process between Afghan government and Afghan Taliban. ये तो हमने दोहा डील के की पॉइंट्स किए. अब दोहा डील लेड टू इंट्रा अफगान डायलॉग. दोहा डील की कंटिन्यूएशन क्या बनी? इंट्रा अफगान डायलॉग. इंट्रा अफगान डायलॉग में की पॉइंट्स क्या? नंबर 1, exchange of prisoners between Afghan government and Afghan Taliban, which got completed by September 2020, जो September 2020 में complete हो गया.
दूसरा, पावर शेयर by Afghan government with Afghan Taliban, which is in process. Negotiation उस पे क्या चल रही हैं. अब क्या हुआ? Trump has lost the elections. Biden has become the president of America. And one of his official interviews, Biden announced to revisit the negotiation process or the Doha deal that is between US and Afghan Taliban. The same was the opinion given by Secretary of States of America, the newly appointed Secretary of States of United States of America. Reasons क्या दिए? Why would White House or America revisit the deal? Because Trump decided the deal in haste. कैसे? He agreed to complete pull out of the troops. इसी तरीके से the release of all Taliban prisoners was facilitated by Trump. तीसरा, giving more and more power share to Afghan Taliban. So such and more were the factors that made the Doha deal, US Taliban deal, a hasty deal, a deal signed in haste that was to be used for electoral campaign, winning election. ठीक. अब what would happen next? आगे क्या होगा? बाइडेन ने तो डिसाइड कर दिया कि वो रिविजिट करेगा. आगे होगा क्या? Point number 1, the possibilities या prospects of peace जिसको मैं कह रहा हूं, क्या होंगे अफगानिस्तान में? US has clearly announced, the Biden administration has clearly announced that America does not intend to completely pack up from Afghanistan. मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं आज भी मुझे सुन रहे होंगे, और तब ये कोई बातें नहीं थी, ट्रंप वाली बातें चल रही थी. मैंने कहा अमेरिका अफगानिस्तान में आग लगे, खुदा न ख्वास्ता तो लगने दो, अफगानिस्तान जल जाए लेकिन वो बग्राम एयरबेस को खाली नहीं करेगा. वही हो रहा है. तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर जो बाइडन हैज अनाउंस्ड नॉट टू कंप्लीटली इवैक्यूएट अफगानिस्तान. Not only US but NATO has announced not to completely abandon Afghanistan, militarily abandon Afghanistan. न सिर्फ US ने अनाउंस किया बल्कि NATO ने भी अनाउंस किया. ऐसा क्यों? Why? अब देखिए हम साथ साथ में एनालिसिस कर रहे हैं. Because US and NATO wants to end the endless war. वॉर एंड टेरर को तो खत्म करना चाहते हैं, बट यूएस एंड नेटो हैव मैसिव जियो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इन अफगानिस्तान. उसके अफगानिस्तान में बड़े स्ट्रॉन्ग जियो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं. और वो क्या? कंटेनमेंट ऑफ रशिया, चाइना एंड ईरान. रशिया, चाइना, ईरान को कंटेन करना. सो कंप्लीटली पैकअप नहीं करेंगे.
हेस्ट डील जो बाइडेन कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वो कंप्लीटली पुल आउट के लिए एग्री कर गया था ट्रंप। बाइडेन कहता है हम कंप्लीट पुल आउट नहीं करेंगे। बाइडेन के बाद फिर नेटो सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि हम कंप्लीटली पुल आउट नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ऑफ देयर जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। ठीक ना, इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट from the time negotiation process initiated with Afghan Taliban, whether that was Doha talks, वो Doha talks थे, या उससे पहले क्वाड्रिलेटरल QCG talks थे, QCG क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप, या अबू धाबी टॉक्स थे, अबू धाबी टॉक्स और मोर। जब जब तालिबान के साथ टॉक्स हुए हैं ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन टॉक्स में तालिबान हैड वन मेजर प्री कंडीशन टू सिट ऑन द नेगोशिएशन टेबल, दैट अमेरिका वुड गिव अ प्लान फॉर कंप्लीट पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान, कंप्लीट पुल आउट, मिलिटरीली कंप्लीट पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान का प्लान देगा, तब जाके हम नेगोशिएशन के लिए बैठेंगे। Now, when Biden has decided not to completely pull out the troops from Afghanistan, that would antagonize Afghan Taliban again. मतलब क्या? The chances of sabotaging the Doha deal are getting imminent. वो strong होते जा रहे हैं. And if that happens, मतलब क्या? The reversal of the 2 years plus laborious negotiation process or efforts to bring peace to Afghanistan. मतलब क्या? If US does not pull out troops from Afghanistan, Taliban would not stop fighting in Afghanistan. अगर यूएस अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान से नहीं निकालता, नेटो ट्रूप्स नहीं निकालता, अफगान तालिबान लड़ाई बंद नहीं करेंगे। And if Afghan Taliban does not stop fighting, means war in Afghanistan would continue. अफगानिस्तान में लड़ाई बरकरार रहेगी। As for Taliban is concerned, it is a setback to the demand or to the wish of Afghan Taliban, और वो क्या? To end fighting in Afghanistan. और उसको हम कैसे देखते हैं? The article written by Sirajuddin Haqqani, the article written by Sirajuddin Haqqani in Washington Post, वो यही कह रहा है कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग विश्ड डिजायर रहा है ऑफ अफगान तालिबान टू ब्रिंग पीस टू द कंट्री, लेकिन वो पीस तब तक आ नहीं सकता जब तक इंटरनेशनल ट्रूप्स जाएंगे नहीं। तो वो तालिबान के विश को तो सेटबैक होगा। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पे क्या है? US has to realize, Joe Biden has to realize कि it has got not only geostrategic objectives in Afghanistan, but it has to end the endless war. अब एक और तरफ पे अब आर्ग्यूमेंट पे आ गया हूं। It has to end the endless war in Afghanistan. Stop chasing the ghost war, the war that has proven to be an ulcer for the economy of United States of America. More than $1 trillion cost पड़ी है US को, and उसके बाद नेटो का एक्सपेंडिचर उसके अलावा है।
US and NATO economies are under tremendous pressure. पहले because of the global financial crunch, दूसरा because of COVID-19. अब वो क्या है? They may not be in a position to financially make more and more allocation to the military operations in Afghanistan. क्यों? क्योंकि तालिबान would resume fighting. उसके बाद फिर एक और एस्पेक्ट है, वुड ISKP revive in Afghanistan once again? क्या ISKP अफगानिस्तान में एक बार फिर रिवाइव करेगा? In Doha deal, US and Taliban agreed with each other that fighting war attacks against ISKP would be intensified, and the process did get intensified after 2019. 2019 onward वो process intensify हुआ, and multiple setbacks being faced by ISKP in Afghanistan. क्यों? Because on one hand Afghan Taliban, on the other Afghan government, on the other US and NATO troops increased their attacks against the said terrorist group. But unfortunately, if US and Taliban if US decides to reverse the Doha deal, that would surely antagonize Afghan Taliban. And Afghan Taliban is a far bigger threat for US in Afghanistan, in which US has outrightly failed to defeat Afghan Taliban. अफगान तालिबान को वो शिकस्त देने में नाकाम हो गए. अब would it once again secretly start supporting ISKP to rise and confront Afghan Taliban, as being blamed by Afghan Taliban, by Russia, by Iran? ये ब्लेम करते रहे कि ISKP इन अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है कौन? US. तो क्या ये दोबारा रिवाइव होगा? टाइम वुड टेल. मजीद US does not have too many options if it discontinues the Doha deal or cancel the Doha deal. How it does not have too many options? Militarily, it failed to defeat Afghan Taliban. Conducted more than 2,000 operations in Afghanistan. It costed more than $1 trillion to Afghanistan. Brought in all the possible military technologies to Afghanistan. Brought in more than 100,000 troops into Afghanistan. And not to forget that US has fought the longest ever war in its history in Afghanistan, and the second most expensive war in Afghanistan. तो एक तो मिलिटरीली फाइनेंशियली वो इस पोजीशन में नहीं है, ऊपर से फाइनेंशियली पोजीशन क्या है? द कोविड एंड उससे पहले कोविड पेंडेमिक ने बुरी तरह से इकोनॉमी को हिट किया, उससे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशन ने उसको हिट किया. The same has been the case with the European world. तो
तो मैसिव या सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एलोकेशंस फॉर द मिलिट्री ऑपरेशंस इन अफगानिस्तान would not be that easier for US and NATO countries to continue the war in Afghanistan. ये भी है। देखिए, फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है, रिजल्ट एस्टेब्लिश नहीं है, हम सारे ऑप्शन को जो पॉसिबिलिटीज हैं वो देख रहे हैं। उसके बाद फिर पाक यूएस रिलेशंस कैसे रहेंगे? Pak US relations in the past 2 decades, Pak US relations in the past 2 decades being driven by war on terror in Afghanistan. वो ड्राइव होते रहे हैं किसकी वजह से? कौन ड्राइव करता रहा है? वॉर ऑन टेरर इन अफगानिस्तान। कैसे? Either collaboration or strained relations between the two countries, यानी proximity, cordial relations or antagonism, strained relations was mostly decided by war on terror in Afghanistan between the two countries. इन दोनों ममालिक के दरमियान में कार्डियल रिलेशंस रहे या स्ट्रेंड रिलेशंस रहे, वो पिछले 2 दहाई में एक ही पॉइंट ने क्या कहते हैं ड्राइव किया है, वॉर ऑन टेरर इन अफगानिस्तान। मतलब क्या? 1 पॉइंट एजेंडा रिलेशंस रहे हैं। हमने देखा 2011 एंड 12 में सिवियरली क्या कहते हैं सिवियर हुए रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान आफ्टर सलाला चेक पोस्ट इंसिडेंट, और फिर एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट्स हैं ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, और वो न हुए 2013 ऑनवर्ड, और फिर 2017 एंड 18 में 17 एंड 18 में एक्सट्रीम एंटागोनिज्म ऑफ रिलेशंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पाकिस्तान, कैंसलेशन ऑफ F-16 डील हुआ। इसी तरीके से फिर दूसरा ट्रंप की साउथ एशिया पॉलिसी वाज आउटराइटली एंटागोनाइज्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान। लेकिन दोबारा कोऑपरेशन पे आए तो अगेन फैक्टर क्या था? अफगान वॉर ऑन टेरर इन अफगानिस्तान, कोऑपरेशन। और वो क्या था? ट्रंप wrote a letter to the Prime Minister of Pakistan. Pakistan duly responded, bringing Taliban to the dialogue table, played a leading role in the Afghan peace process or negotiation. दोहा नेगोशिएशन बिटवीन यूएस एंड तालिबान, हम ही पाकिस्तान वाहिद सिंगल मीडिएटर था। उसके बाद फिर इंट्रा अफगान डायलॉग में आफ्टर यूएस पाकिस्तान प्लेड और हैज बीन प्लेइंग अ की रोल। अब बाइडेन क्या करेगा? इफ बाइडेन decides to make US troops stay in Afghanistan and also convince NATO to continue staying in Afghanistan, which they have intended to do so, जो उन्होंने intend किया to do so, that would क्या कहते हैं स्ट्रांगली एंटागोनाइज अफगान तालिबान। उससे अफगान तालिबान जरूर एंटागोनाइज्ड होंगे। मतलब क्या? दे वुड रिज्यूम अटैक्स, वो अटैक्स रिज्यूम करेंगे, एंड यूएस वुड वंस अगेन स्टार्ट ब्लेमिंग पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को वंस अगेन ब्लेम करेगा। किस लिए ब्लेम करेगा? कि पाकिस्तानी टेरिटरीज बीइंग यूज्ड बाय अफगान तालिबान फॉर अटैक्स इन अफगानिस्तान।
Though currently Pakistan has predominantly sealed its border with Afghanistan, काफी हद तक हमने बॉर्डर को सील कर दिया विद अफगानिस्तान, yet again America would continue blaming Pakistan for its own failures in the country. उसके अपने फेलियर्स होंगे, वो पाकिस्तान को ब्लेम करेगा. सो एंटेगोनिज्म के चांसेस बढ़ेंगे दोबारा. बट इफ द डील कंटिन्यूज, अगर ये डील कंटिन्यू करता है, द चांसेस ऑफ विच कैन नॉट बी ऑल टुगेदर नेग्लेक्टेड और नेगेटेड. आप ऑल टुगेदर उसके चांसेस ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ डील कंप्लीटली नेगेट नहीं कर सकते, ओवर रूल नहीं कर सकते. क्यों ओवर रूल नहीं कर सकते? यूएस इज टायर्ड ऑफ फाइटिंग. अफगान तालिबान हैव रियलाइज्ड दे आर ऑल्सो टायर्ड ऑफ फाइटिंग. वो भी थक चुके हैं, बट साथ में दे हैव रियलाइज्ड कि दो दे आर नॉट बीइंग डिफीटेड और दे हैव emerged as a stronger party, but they are not stronger enough to control Kabul. वो emerge तो कर गए as a stronger party, but not stronger enough to control Kabul. तो दोनों में ये रियलाइजेशंस हैं, अमेरिका में भी है, अफगान तालिबान में भी है. मतलब क्या? दे मे फाइंड आउट अ वे, क्या कहते हैं, अ वे आउट. दे मे फाइंड अ वे आउट. कोई दोबारा रीनेगोशिएट करे डील, चांसेस हैं. एंड इफ दैट हैपेंस, अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान वुड वंस अगेन हैव अ की रोल टू प्ले. पाकिस्तान का एक बार फिर की रोल होगा टू प्ले. वॉशिंगटन वुड नीड पाकिस्तान बैडली. If Trump needed Pakistan, Biden would also need Pakistan to in the renegotiation process. Biden in 2014 on his visit to Kabul, when he was the vice president, he was quoted, उसको कोट किया जाता है, when Hamid Karzai, sorry, 2013, when Hamid Karzai tried to blame Pakistan more and more and pressurize US to and asked US to pressurize Pakistan more and more. Biden के words क्या थे? US needs Pakistan more than Afghanistan. Oh, Pakistan is of paramount importance for US than Afghanistan. अफगानिस्तान के मुकाबले में यूएस पाकिस्तान हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये किसके वर्ड्स हैं? बाइडेन के वर्ड्स हैं. ठीक, तो वही बाइडेन हैज बिकम द प्रेसिडेंट. रिलेशन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं. एक तरफ पे मैंने कहा एंटागोनाइज हो सकते रिलेशन, दूसरी तरफ पे चांसेस के नहीं, शायद वर्किंग रिलेशंस चले. तीसरी बात, बोथ द कंट्रीज हैव रियलाइज्ड, दोनों ममालिक ने रियलाइज किया है कि पाक यूएस रिलेशंस शुड नो मोर रिमेंड ड्रिवन बाय वॉर एंड टेरर इन अफगानिस्तान. पाक यूएस रिलेशन सिर्फ वॉर एंड टेरर बेस्ड ना रहे, बल्कि मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस को, या क्या कहते हैं, एंगेजमेंट को एनकरेज किया जाए. ट्रेड रिलेशंस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, डिप्लोमेटिक रिलेशन को इंप्रूव करना, रिज्यूमिंग डिफेंस कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान एटसेट्रा. ये भी है. अब क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखिएगा और इस लेक्चर को अभी आप लोगों ने सुन लिया, दोबारा सुनिएगा. स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल एक जगह पे भी बाहर नहीं निकला और जितने आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए थे कोशिश की कि आपको वो सारे या अक्सर दे सकूं.
एंड करेंगे आप कैसे? देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में मैंने कुछ भी विथ सर्टेनिटी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स एस्टेब्लिश्ड नहीं है, होंगे इन द फ्यूचर। डन? ओके। कंक्लूजन क्या होगा? Joe Biden has decided to revisit the 2 years long क्या कहते हैं दोहा deal that was a marathon effort, of negotiation between US and Afghan Taliban. अब उन्होंने डिसाइड किया टू रिविजिट इट। Revisiting the deal would have surely negative implications if the deal is reversed. But there are probabilities that the deal would not be completely reversed. क्यों? Because of the limitations of US on one hand, Afghan Taliban on the other. The role of Pakistan would remain crucial to the Afghan peace process as it has been in the past. Islamabad needs to work out strategies in the wake of the newly emerged situation. क्योंकि ट्रम्प तो इलेक्शन हार चुका है, बाइडेन आ गया है, तो इस्लामाबाद अपनी पॉलिसी ऑप्शंस को चॉक आउट करे कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं इन ऑर्डर टू प्ले अ लीडिंग रोल इन द अफगान पीस प्रोसेस ऑन वन हैंड एंड टू कीप इंप्रूविंग रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन द अदर। क्वेश्चन एंडेड। ऐसे कर जाओ क्वेश्चन को तो खासा पुर उम्मीद हो इंशाल्लाह कि आप लोग स्कोर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट। एक बड़ा लेंथी टॉपिक उठा रहा हूं, लेकिन उसमें चंक्स होंगे, एक एक को प्योरली क्वेश्चन फॉर्म में करवाने की कोशिश करूंगा। और वो क्या? जो बाइडेन हैज वन द इलेक्शन, नेशनल टॉपिक्स में मैं बाद में आऊंगा। जो बाइडेन हैज वन द इलेक्शन, has decided to reverse many of the policies of Trump. वो ट्रम्प के कई सारे पॉलिसीज को रिवर्स करेगा और प्रोबेबल पॉलिसी अप्रोच ऑफ जो बाइडेन क्या होगा ऑन दोज क्रूशल इश्यूज। पहला पॉइंट उठा रहा हूं। अब ये इस पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके किसी भी एक डायमेंशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हर किसी को इतना करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अलग क्वेश्चन आए तो तुम लोग कर सको, अलग ना आया कंबाइंड आए तो तुम लोग स्क्वीज करके कर सको। Joe Biden and Paris Climate Agreement. Joe Biden and Paris Climate Agreement.
Joe Biden, after entering into the Oval Office, one of the first file he signed as a president was to rejoin the Paris Climate Agreement, to reverse the decision of Trump and rejoin the Paris Climate Agreement. This decision would have far-reaching implications on climate politics in general, and would give more and more hopes to the efforts against increasing carbon emissions, to the hopes against reducing the carbon emissions more and more. कैसे? पहले शुरू कर दो ट्रंप से। In 2017, one of the crucial steps taken by Trump was to pull US out of the Paris Climate Agreement. The first ever agreement that was binding. पहला एग्रीमेंट जो कि बाइंडिंग था. The first ever agreement that made the world countries or give a carbon cut-off plan. First ever agreement जो बाइंडिंग था, दूसरा कार्बन कट ऑफ प्लान दिया. The first ever agreement जिसने was not only क्या कहते हैं, carbon cut-off plan was given not only by countries but also by multinational companies. And it was a move, a great move, leap forward towards more and more plantation in order to send carbon back to earth. मैंने एक पैराग्राफ में इंपॉर्टेंस ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बता दी. अब ट्रंप ने क्या कर दिया? ट्रंप पुल्ड यूएस आउट ऑफ द डील. ट्रंप ने यूएस को डील से निकाल दिया. क्यों? वन मेजर रीजन ही गेव वाज the increasing temperature of the world. If it is because of more carbon emissions, the increasing temperature of the world, if it is because of more carbon emission, then US is not the only major carbon emitter. The world's largest carbon emitter is China. Then it is Europe. Second, it is US. Third, it is Europe. Fourth, it is India. And the rest of the world. Now, China and other major emitters are not ready to make carbon cuts. If China and other major emitters are not ready to make carbon cuts,
why should US make carbon cuts or reduce carbon emissions if major emitters like China, India, Japan, and the list is quite long, they are not ready to make carbon cuts? Then why should US make or reduce carbon emissions or reduce carbon burning? Especially when that would be a setback to the economic growth of the country, और वो भी तब जब वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेटबैक हो, तो हम क्यों करें? दूसरा वो क्या कहता है कि कार्बन एमिशन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड is because of climate change, because of carbon burning. जो climate change है, increasing temperature of the world है, that is because of more and more carbon emission, is a conspiracy theory. It's a myth, a conspiracy theory floated by China. क्यों? To slow down the growth of America. The same was the stance given by Trump's party predecessor, Mr. Bush Jr., George Bush Jr. उनका भी यही स्टांस था. तीसरा रीजन उन्होंने क्या दिया? एंड द रियल रीजन वाज कार्बन इंडस्ट्रीज have been the major financiers of were the major financiers of Trump electoral campaign, especially coal industry, the locally produced coal industry. दूसरा, the oil and gas industry, local and importers दोनों, local प्रोडक्शन एंड इंपोर्टर्स दोनों. निकल गया ट्रंप, यूएस को निकाल दिया फ्रॉम द एग्रीमेंट. इट वॉज अ ह्यूज सेटबैक टू द एफर्ट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. कैसे? US being the world leader decided or refused not to lead the world in the efforts against climate change. मतलब क्या? The world became leaderless. US under Obama administration became a leader of the world in the efforts against climate change. Trump made the world leaderless again in the anti-climate efforts, climate change efforts, anti-climate change efforts. Now, what would Biden do? अब बाइडन क्या करेगा? Joe Biden, who has not only been a key follower of Obama, वो सिर्फ ओबामा के की फॉलोअर्स नहीं रहे हैं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन रहे. ही प्लेड अ की रोल, उन्होंने की रोल प्ले किया था किस में? इन द नेशनल एफर्ट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. जो नेशनल लेवल पे एफर्ट्स हुई इन अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज. For example, increasing development of the carbon-free energy or green energy industry, उसमें बड़ा रोल प्ले किया उसने.
during the Obama administration. He also played a role in convincing India and other countries to reduce carbon emissions and give a carbon cut-off plan. तो एक तो उनकी हिस्ट्री है नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। अब बाइडेन ने क्या कर दिया नेशनल लेवल पे? नंबर वन, ही पुट अ बैन नेशनल लेवल पे, ही पुट अ बैन ऑन द drilling of more oil and gas fields। चंद दिन पहले की खबर है, उन्होंने पाबंदी लगा दी ऑन ड्रिलिंग मोर ऑयल एंड गैस फील्ड्स। एक तो ये कर दिया। दूसरा, मोर एंड मोर सब्सिडीज being announced by Biden for the carbon free energy industry, as were announced or given by his party predecessor and President of America, Mr. Obama। इन्होंने भी यही किया। दो, तीसरा क्या कर दिया? He appointed crucial figures to his cabinet in order to enhance, revive and enhance the role of America against the climate change। सबसे पहले जॉन केरी, who was a cornerstone to Paris Climate Agreement। जॉन केरी जो कि लीडिंग रोल प्ले किया था, is appointed as advisor to president on climate change। इसी तरीके से एडवाइजर ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन नेशनल लेवल पे उन्होंने अलग अपॉइंट किया। मजीद दो बंदे, एक इंटरनेशनल लेवल के लिए, एक नेशनल लेवल के लिए उन्होंने अपॉइंट कर दिए। वो नाम दूसरे का देख लीजिएगा क्या है, आई फॉरगॉट द नेम। ये कर दिया। तीसरा, फोर्थ, बाइडन ने अनाउंस किया टू लीड द वर्ल्ड फ्रॉम द फ्रंट वंस अगेन इन द एफर्ट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। As the world was led by Obama during Paris Climate Agreement, Biden would do the same again। बाइडेन वही करेगा। पहले क्या कर दिया? रीजॉइन किया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को। दूसरा, he would play, or Biden administration would play a role in convincing the major emitters to act upon the carbon cut-off plan। जितने भी मेजर एमिटर्स हैं, whether countries or multinational companies, उनको प्रेशराइज कर दे, उनको कन्विंस कर दे to make more and more carbon cuts। ठीक, इसी क्वेश्चन में एक मजीद ऑप्टिमिज्म के दो पॉइंट्स डाल दें। जो बाइडन हैज अप्रिशिएटेड द न्यू ग्रीन डील साइंड बाय यूरोपियन वर्ल्ड इन 2020। 2020 में यूरोपियन वर्ल्ड ने जो न्यू ग्रीन डील साइन की है, उसको बाइडन ने अप्रिशिएट किया है कि इट्स अ ह्यूज मूव बाय द यूरोपियन वर्ल्ड अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और वो क्या है?
to make Europe carbon free by 2050. यूरोप को कार्बन फ्री बनाना by 2050. मतलब क्या? यूरोप would no more burn fossil fuels, rather would generate its energy from green energy sources or carbon free sources, renewable sources. China has also, or Biden has also announced, Biden ने ये भी announce किया to work with China, India and other emitters for reducing carbon emissions. Currently, China provides the highest amount of loans to the world countries on soft terms and conditions. Currently, China सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहा है to world countries, softer loans प्रोवाइड कर रहा है to world countries to overcome the increasing carbon emission. और वो किस वो में दे रहा है? कार्बन फ्री एनर्जी में यूरोप को दे रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को लोन दिए जा रहा है. तो वो कहता है कि बाइडेन क्या कह रहा है कि मैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करूंगा to make to ensure the reduction of carbon emission and to make the world a safer place. आप ये क्वेश्चन यूं करेंगे. अब मजीद एंट्रो कंक्लूजन टॉपिक्स को नहीं दूंगा, सिंपल पॉइंट्स बताऊंगा. जो बाइडेन एंड JCPOA, जो बाइडेन एंड JCPOA इंट्रोडक्शन के फौरन बाद जो आपका पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा? द P5+1 एग्रीमेंट और डील और JCPOA डील हैड टू मेजर डायमेंशंस, दो बड़े डायमेंशंस थे. वन, ईरान वुड रिड्यूस द एनरिचमेंट लेवल ऑफ यूरेनियम. ईरान रिड्यूस करेगा द एनरिचमेंट कैपेसिटीज ऑफ द कंट्री. कैसे करेगा? पहला पॉइंट एक्सप्लेन हो रहा है. इट वुड रिड्यूस द एनरिचमेंट लेवल ऑफ यूरेनियम टू 3.4%. 3.4% तक लेके आएगा. Those nuclear reactors having higher enrichment capacities would be dismantled. वो डिसमेंटल किए जाएंगे. मजीद, Iran would transport the already enriched and uranium that is already enriched, highly enriched, and is placed in a stored form. Stored form में पड़ा हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट करेगा टू रशिया एंड टर्की. रशिया टर्की को वो ट्रांसपोर्ट करेगा, अपने पास नहीं रखेगा. मजीद, Iran agreed to the IAEA observers role. IAEA, International Atomic Energy Agency, accompanied by a member each
accompanied by a member each from the P5+1. A commission bana headed by IAEA, accompanied by a member each from P5+1 countries. That would present a quarterly report. Quarterly report present karega regarding the performance of Iran. On the basis of which क्या होगा? Sanctions would be removed from Iran. ईरान से sanctions remove किए जाएंगे. ये तो point number 1 हुआ. Point number 2. करंट लगा? अब इतने महंगे कैमरास में भी अगर ये हो तो फिर तो ओके, ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट उसका क्या है? दैट इज sanctions would be stepwise removed from Iran. कौन से sanctions remove किए जाएंगे? The foreign reserves of Iran which were frozen, the foreign reserves of Iran which were frozen would be unfreezed. एक. दूसरा, Iran would be allowed to increase its hydrocarbon exports to the world. और मेजर मार्केट्स कौन? चाइना, इंडिया, यूरोप, जापान, एटसेट्रा. मजीद, ईरान would also be allowed to export any of its products with the exception of defense. For example, पर्शियन कारपेट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन? ईरान. फूड आइटम्स को एक्सपोर्ट करना वगैरह. सो ईरान कंप्लाई करेगा विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डील. इन रिटर्न सैंक्शंस रिमूव होंगे फ्रॉम ईरान. देखिए, हमने बिल्कुल उसको 2 पैराग्राफ के अंदर अंदर स्क्वीज कर दिया. क्यों? क्योंकि टॉपिक एग्जैक्टली ये नहीं है, टॉपिक दूसरा है, लेकिन मेंशन करना इसका मस्ट है. अब ट्रंप ने क्या कर दिया? दिस वॉज कॉल्ड अ हिस्टोरिक डील. अब ट्रंप पे आ गया हूं. व्हाट डिड ट्रंप डू? ट्रंप ने क्या कर दिया? ट्रंप पुल्ड यूएस आउट फ्रॉम द डील. ट्रंप ने यूएस को डील से निकाल दिया. इट वॉज कॉल्ड अ हिस्टोरिक अचीवमेंट बाय या हिस्टोरिक डील बाय ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन. ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासकर जॉन केरी ने कहा था कि इट्स अ हिस्टोरिक डील. ओबामा ने कहा था खुद. लेकिन ट्रंप ने क्या कह दिया? ही कोटेड द वर्ड्स ऑफ, या कोटेड नहीं, कॉपिड द वर्ड्स ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल. वो वर्ड्स कॉपी किए. हिस्टोरिक ब्लंडर, कि उसने हिस्टोरिक ब्लंडर कर दिया. किसने? ओबामा ने, by signing the deal. कैसे हिस्टोरिक ब्लंडर कर दिया? This deal provided Iran, number 1 point, this deal provided Iran with an opportunity to increase its presence in the Middle East more and more. प्रेजेंस अपना, ईरान अपना प्रेजेंस इन मिडल ईस्ट बढ़ा दे, स्पेशली इंटेलिजेंस मिलिट्री प्रेजेंस इन द मिडल ईस्ट बढ़ा दे. और वो कहां के बढ़ा दिया? मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था. सीरिया में, लेबनान में, इराक में, यमन में, बहरेन में, एटसेट्रा. उन्होंने अपना प्रेजेंस बढ़ा दिया. कैसे प्रेजेंस बढ़ा दिया? अब ये ट्रंप को कोट कर रहा हूं. क्या कह रहा है? कि ईरान स्टार्टेड प्रोवाइडिंग मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इट्स एलाइज एंड प्रॉक्सीज इन द मिडल ईस्ट, बी इट हिजबुल्ला इन लेबनान, महदी मलेशिया इन इराक, or Houthi rebels in Yemen,
or the uprisers in Bahrain on one hand, and Bashar al-Assad government on the other. And the architect of the policy was General Qasem Soleimani, who was killed in a drone strike by US in Iraq. ये सब कुछ कब हुआ? 2015 onward हुआ. क्यों? Because JCPOA provided Iran with an opportunity to enhance or to improve its economy. इसकी इकोनॉमी रिस्टोर होना शुरू हुई. The restoration of the economy of Iran began with the JCPOA, provided it with an opportunity to give financial support, military support to its allies and proxies in the Middle East. तो ये सब कुछ इस डील की वजह से हुआ. कौन कहता है? ट्रंप. रिजल्टेंटली क्या हुआ? The US allies in the region, be it Israel or Saudi Arabia or the overall GCC, got antagonized. वो सऊदी अरेबिया, इजराइल था on one hand, या सऊदी अरेबिया और specifically and GCC in general antagonized हुए. ठीक. दूसरा रीजन उसने क्या दिया, और ये कौन है? यूएस के क्लोजर एलाइज है. सेकंड मेजर रीजन क्या दिया? कि the JCPOA agreement provided Iran with an opportunity to stabilize its economy and to invest more and more in its defense. इकोनॉमी स्टेबलाइज होना शुरू हुई और क्या कहते हैं, इसने डिफेंस में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. और सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि डिफेंस में इन्वेस्ट करना? दैट इज द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स. तो उसने क्या कही? ईरान हैज बीन ब्लफिंग द वर्ल्ड. वो दुनिया को ब्लफ कर रहा है. ऑन वन हैंड it has decided, it has announced not to increase या to reduce its enrichment capacities. On the other hand, it is developing a ballistic missile system. So actually Iran is trying to buy time. वो वक्त खरीद रहा है. It would once stabilize its economy, it would resume the enrichment process again. Enrichment process को वो दोबारा resume करेगा. So such were the arguments given by Trump. मजीद उसने क्या कर दिया? अब sanction लगा दिए. कैसे? He pressurized the multinational companies to pull out from Iran. Majority of multinational companies, specifically in the hydrocarbon sector, जो आई हुई थी, whether they were from Europe or US or Japan or ASEAN countries, they pulled out from Iran. On the other hand, Trump pressurized the allies of USA, be it Europe, India, Japan, etc. Europe, Japan, India, etc. को pressurize किया to downsize their imports from Iran, which they did, जो उन्होंने किए. अब बाइडन क्या करेगा? What would Biden do? No doubt, Obama administration made a historic deal with Iran, successfully stopped Iran from acquiring a nuclear bomb. Not only that, और इससे क्या हुआ? Because of which अब क्या होगा?
US Middle Eastern allies, be it Israel or Saudi Arabia or the rest, would feel more secure. ये कर दिया. दूसरा, the chances of normalizing relations with Iran after 1979, the chances of normalizing relations with Iran after 1979 were made possible by Obama administration through this deal. ये भी कर दिया. अब इस डील में there were 3 people cardinal to the deal on the part of US: Obama, John Kerry, and Joe Biden. Ideally speaking, Joe Biden would love to revive the agreement once again. But practically, it doesn't seem viable option. Realistically, ये practical या viable option नहीं रहा. क्यों? When the deal was signed, Iran did not have this much penetrating role into the Middle East. जब ये डील साइन हुई थी तब ईरान का इतना पेनेट्रेटिंग रोल, ट्रबलिंग रोल इनटू द मिडल ईस्ट नहीं था. अब है. दूसरा, ईरान डिड नॉट डेवलप इट्स बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम दैट इज हैविंग द कैपेसिटी टू कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स. तो अब तो सिचुएशन बदल गया. Biden would not be in a position to revive the deal in letter and spirit altogether. वो नहीं कर पाएगा. But would surely try to downsize the intensity of antagonism in the behavior of White House towards Tehran. तेहरान की तरफ, ईरान की तरफ जो इंक्रीजिंग एंटागोनिज्म रहा इन द बिहेवियर ऑफ व्हाइट हाउस अंडर ट्रंप, वो जो बाइडन डाउनसाइज जरूर करेगा. क्या कर सकता है वो? नंबर 1, to stop Iran from nuclearization, it would encourage European countries and other allies of America to partially resume their energy imports from Iran. ये possible है. कैसे? Article 26 of the JCPOA, Article 26 of JCPOA clearly कहता है कि if the international community, the member countries, मतलब the 6 countries, if any one of them or all they pull out from the agreement, Iran would have the right of enrichment up till 20%. ईरान up till 20% enrichment करेगा और ईरान ने वो करना शुरू कर दिया. And Iran has threatened to increase the enrichment even more. So, there is a need of stopping Iran from nuclearization once again. As Iran is back on the track of nuclearization, उसको stop करने की ज़रूरत है. तो उसके लिए वो क्या करेगा? ईरान की इकोनॉमी पे जो सैंक्शंस हैं, सैंक्शंस वुड बी रिलीज्ड, रिलैक्स्ड, वो उसको ईज किया जाएगा. स्पेशली यूरोपियन वर्ल्ड, इंडिया, आसियान, जापान वगैरह, वो इंपोर्ट्स दोबारा रिज्यूम करना शुरू कर सकते हैं. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि there might be another agreement signed with Iran. एक और एग्रीमेंट साइन हो सकता है विद ईरान.
This time an even bigger comprehensive agreement. JCPOA dealt with denuclearization only. JCPOA में क्या था? Denuclearization था. किस चीज पे फोकस था? Denuclearization पे फोकस था. Reducing the enrichment capacities of uranium in Iran. ये फोकस था. This time there might be an agreement with Iran जिसमें ईरान would roll back its ballistic missile system. मजीद उसमें पॉसिबिलिटी क्या है? ईरान would downsize या stop its covert intelligence क्या कहते हैं intervention into the Middle East, कि वो स्टॉप कर दे. उस पर भी बात हो सकती है. ये एक और ऑप्शन है. लेकिन एक चीज श्योर है, वन थिंग इज श्योर, एंड दैट इज के जो बाइडेन वुड नॉट completely or A to Z or follow the policy of Trump in the context of Iran. वो ट्रम्प की पॉलिसी को तो फॉलो नहीं करेगा. बट ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ पे फॉलोइंग ओबामा's अप्रोच कंप्लीटली इज नॉट पॉसिबल ईदर. वो भी पॉसिबल नहीं है. ना तो वो ट्रम्प को फॉलो करेगा, वो पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करेगा. दूसरी तरफ पे ओबामा की पॉलिसी को भी एज इट इज फॉलो करना अब पॉसिबल नहीं रहा. So he has to come up with more innovative and comprehensive approach to deal with Iran and to downsize tension in the region. Topic done. मैंने intro conclusion तो दे दिया, intro शायद नहीं दिया, तो आप इसको यूं करेंगे. एक टॉपिक कर लो, पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है? इसके बाद फिर Joe Biden and the Middle East. Joe Biden and Middle East. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आप क्या क्या डील करेंगे? 1, इजराइल. दूसरा जीसीसी. तीसरा ईरान. ठीक, ये आप इसमें डील करेंगे. In United States of America, elections are being won not only on the basis of national policies or internal policies. Foreign policy is equally of paramount importance. And the foreign, अब ये फिर इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. And the foreign policy of United States of America, Middle East has been a key point. Middle East has been of paramount importance, extreme importance with United States of America, where Israel, Saudi Arabia, GCC countries and Iran are dealt with. Israel, Saudi Arabia in particular, GCC in general,
जो तीसरा पॉइंट आपको अभी से बता रहा हूं, आप तीसरा पॉइंट बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैंने ईरान का एक्सप्लेन किया, आप उसको स्क्वीज कर देंगे, आप उसको स्क्वीज कर देंगे, तीसरा पॉइंट आपका वो होगा। ठीक है, ये दो बकिया पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले इजराइल, ट्रंप बाइडेन, और बाइडेन को प्रेडिक्ट कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस and present intentions or statements being made by him or developments taken by him. US and Israel, point number one. US and Israel. Israel has been cardinal to the foreign policy of United States of America. The country has been a geostrategic liability of United States, for United States of America. Geostrategic partner नहीं, liability. उसको डिफेंड करना यूएस की मजबूरी है। Israel being planted on the Arab land as a state, रोल किसका रहा? यूएस का, यूके का। बेल्फोर डिक्लेरेशन जिसने पढ़ी है उसको आइडिया हो जाएगा। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस ऑफ द कंट्री, इजराइल के डिफेंस को स्ट्रांग करना, उसमें की रोल प्ले करता रहा है कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मजीद, Jewish lobby has been of immense importance in US economic politics. Jews major contributors हैं to the economic growth of USA. यूएस के इकोनॉमिक ग्रोथ में ज्यूज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस है। यूएस में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी, कैपिटल हिल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी कौन रहे हैं? ज्यूज रहे हैं इन द फेवर ऑफ इजराइल, influencing the policies of US in the favor of Israel. US governments, irrespective whether that was Democrats or Republicans, वो Democrats रहे हैं या Republicans रहे हैं, they have been supporting Israel, protecting and supporting the interests of Israel on any forum, whether UN Security Council or any other forum. US support करता रहा है, प्रोटेक्ट करता है the interest of Israel. ठीक, ये इंट्रो के बाद आपका एक पॉइंट यूं बिल्ड करेंगे। फिर ट्रंप ने क्या कर दिया? What did Trump do? ट्रंप ने क्या कर दिया? Number one, regarding Israel, Trump shifted US embassy. Number one, he signed the 22 years old bill passed by US Congress. उसको साइन कर दिया, और उस बिल में क्या था? US endorsed the claim of Israel over Jerusalem as the capital of Israel. दूसरा, US also shifted its embassy from Tel Aviv to Jerusalem. एक तो ट्रंप ने ये कर दिया, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ किया, इंटरनेशनल चार्टर, यूएन चार्टर किया इन द फेवर ऑफ इजराइल। दूसरा, to make Israel a safer place, इजराइल को सेफर प्लेस बनाने के लिए क्या कर दिया?
कैंप डेविड एग्रीमेंट, सॉरी अब्राहम डील करवाएं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अरब कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड इजराइल एज अ सॉवरन स्टेट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा, 2 बड़े मूव्स किए। तीसरा, डिस्करेज्ड और कन्विंस्ड बेंजामिन नेतन्याहू टू स्टॉप the annexation or territorial as usurpation of Palestinian lands। ये कर दिया, और उसमें जेरड कुशनर का मेजर रोल रहा। मजीद यूएस recognized the claim of Israel, endorsed the claim of Israel over Golan Heights, the bordering area of Israel with Syria। ये भी कर दिया। ये सब कुछ ट्रंप ने किया। बाइडेन क्या करेगा? This is probably one of the many areas, one of the many areas हैं, one of the many areas हैं where Biden would not retreat the policies of USA। one of the few areas है, many areas नहीं, one of the few areas हैं जहां पे वो ट्रंप के पॉलिसीज को रिवर्स नहीं करेगा। क्यों? Whether that was Trump or Bush or Obama or Bill Clinton, जितने भी थे, in their electoral promises, उन्होंने क्या क्या promises किए कि they would sign the 22 years old 1996 bill which Trump did, जो ट्रंप ने किया। उन सब के इलेक्टोरल प्रोमिसेस में ये प्रॉमिस था। सेम वाज द केस विद जो बाइडेन, वो भी फॉलोवर रहा इसका व्हेन ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन किसी ने साइन नहीं किया। अब रिवर्स तो कम से कम ये नहीं करेगा। दो ओबामा डिड नॉट साइन इट, बट बाइडेन वुड नॉट रिवर्स इट ईदर। दूसरा, एज फॉर डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन इज कंसर्न, जहां तक डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन का सवाल है, that has been the policies of the deeper state of America, Israel as a sovereign state to be recognized। ये पॉलिसी डीपर स्टेट की है, ये ओबामा या ट्रंप या किसी इंडिविजुअल की नहीं है। तो जो ट्रंप ने किया, बाइडेन उसको भी कंटिन्यू करेगा रिकॉग्निशन के केस में, और मजीद एफर्ट्स करेगा टुवर्ड्स द रिकॉग्नाइजिंग इजराइल एज अ सॉवरेन स्टेट बाय मोर एंड मोर अरब वर्ल्ड कंट्रीज। मजीद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन वाज more vocal on territorial usurpation of Israel. Trump was not. Trump नहीं था. But to get recognition for Israel as a sovereign state, Jared Kushner convinced Tel Aviv या Benjamin Netanyahu to stop or delay at least the territorial usurpation, especially of the West Bank. तो यहां पे बाइडेन को अगेन द पॉलिसी सूट्स बाइडेन, ये पॉलिसी भी बाइडेन को सूट करती है। तो इजराइल रिलेटेड उनकी पॉलिसीज ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। पॉइंट नंबर 1 आपका। पॉइंट नंबर 2, मिडल ईस्ट में अरब वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया इन पर्टिकुलर, अरब वर्ल्ड इन जनरल।
The Muslim Arab world has been of immense importance for United States of America, primarily because of the hydrocarbon importance of the country. ईरान के मिडिल ईस्ट के हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंस की वजह से ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रहा। और फिर यूएस द डॉलराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड occurred primarily because of petrodollar agreement between US and Saudi Arabia. सऊदी अरब ने पेट्रोडॉलर एग्रीमेंट साइन किया, उसकी वजह से डॉलर became an international trading currency. इसी तरीके से फिर all the Arab nations are the geostrategic partners. Strategic partners हैं सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, बहरेन, जॉर्डन strategic partners हैं. US has got military bases in these countries. सऊदी अरब में बेस है, कतर में बेस है, जॉर्डन में बेस है, military bases of US in these countries. सो पहले से इंपॉर्टेंट रहे हैं. ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप further increased collaboration with the Arab countries, especially with Saudi Arabia and UAE. और वो भी in the context of providing defense equipments to the countries, to the above mentioned countries. कैसे? US has become the world's largest exporter of weapons to Saudi Arabia. Arab NATO, that is in the making, Arab NATO, that is the brainchild of Saudi Arabia, is becoming a reality because of the increasing military collaboration of US with Riyadh. Weapons देना, variety of weapons देना, helicopters, jet fighters, ballistic missiles, warships देना. There is a long list, जरा वो देख लीजिएगा. उसके बाद F-35 जेट फाइटर्स का डील करना विद अच्छा मैं लाइव हो गया हूँ. हो गया. ले आओ. जल्दी. ये कोई 28-30 पे कर दें.